Hello students, welcome on my YouTube channel. Today in science we will study another topic, that is light, shadows and reflection. In this chapter we will study about sources of light, what are transparent, opaque, translucent objects, difference between ray and beam, what are shadows, and how we can construct a pinhole camera. So let's begin our chapter. Now see, with the dawn, you can see many objects all around you. Some objects are colorful and some are quite different. Now see here, the book tells that in the dawn means early in the morning when the sun shines, we see many objects around us, many colorful things we can see around us. Now see what happens at the dark night. The objects present are not visible. Similarly, in a dark room, if you enter, you cannot see anything. If you switch on bulb or light a candle, you can see the objects in the room. Now see, the same way when we go in the dark, we cannot see the objects which are present in the dark room until and unless the room is not lit by anything. We cannot see the things available in the room. Can you say what helps you to see the objects in the room? Obviously it is light. Now see, we come to know that light help us to see the things. Even in the daytime we can see the things because of the sun rays or by the sunlight, and in the dark room if there is light we can see the objects present in the room, otherwise we cannot see anything. So what is necessary to see the objects? The conclusion is that light is necessary to see the objects. Clear? Now see sources of light. Now you can ask, what give us light? It is luminous objects that can emit of their own, such as sun, lighting, electric bulb when it is switched on, etc. Now see, luminous objects are the objects which give us light, and some of the examples are sun, lightning, electric bulb, etc. These are the examples of luminous objects which give us light. Therefore, we can say the objects that can emit of its own light is called luminous object. That can emit its own light means those objects जिसमें से light निकलती है, those are called as luminous objects. And next is non-luminous objects are those which cannot emit light of their own, such as moon, chair, painting, shoe, etc. These are examples of non-luminous objects because इनमें से light नहीं निकलती. Any object that emits light is called source of light. Now see, one more important thing is, students, जो भी object जिसमें से light निकलती है, that are known as the object is known as source of light. Sources of light can be either natural or artificial. Natural means made by nature and artificial means made by men. आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर मैन मेड. फॉर एग्जाम्पल्स कैंडल लैम्प, आपने देखा होगा कैंडल और लैम्प, दीज आर मेड बाय मैन, सो दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. एंड सन, स्टार्स, ग्लो वर्म etc., they are called as natural sources of light. Is it clear to you? Now our next topic is transparent, opaque and translucent objects. Here we start. Do you play hide and seek game? If you hide behind a glass window, your friend can spot you. Now see, hide and seek game you must have seen. आप अगर आप खेलते हैं और अगर आप ग्लास विंडो के पास छुप जाते हैं तो आपका फ्रेंड आपको देख लेगा and spot you. From this example you can get the idea of transparency. Now see, when you play the game of hide and seek, when your friend see you through the glass window, it is an example of transparency. Hence materials through which things can be seen are called transparent. इसलिए हम कह सकते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, when we can through the materials through which we can see the things, जिसके ऐसा material जिससे हम things देख सकते हैं, they are known as transparent material. For example, water, air, glass etc. Second is materials through which things cannot be seen are called opaque materials. जिससे हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती वैसे उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? opaque materials. For examples, metal, cement, coal, wood etc. These are examples of opaque materials.
We can never see through the opaque bodies because they do not allow the light energy to pass through them. Why we cannot see through the opaque objects? Because they don't allow the light to pass through them. इनसे light pass नहीं होती, so they are called as opaque objects, and we cannot see the things from the opaque materials. Materials through which things can be partially seen are called as translucent material. ऐसे materials जिनसे हम चीज़ों को partially means आधा या धुंधला हल्का हल्का देख सकते हैं, that materials are called as translucent. Clear नहीं दिखाते, only there's partially we can see, those materials are called as translucent materials. It means through the translucent material we cannot see things clearly. हम इससे translucent material से हमें चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं. For example, smoked glass, fog, मिस्ट, क्लाउड्स, ऑयल्ड पेपर. पेपर पे ऑयल लगा के देखेंगे तो आपको पीछे जो भी आप आगे रखते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कैसी बनेगी? पीछे साफ क्लियर बनेगी? नहीं, रफ इमेज बनेगी. टिश्यू पेपर सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. Our next topic is ray and beam. The path along which the light energy travels in a given direction is called a ray of light. ऐसा रास्ता जिससे लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन डायरेक्शन में लाइट चलती है, दैट इज नोन एज द रे. इट इज शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन. नाउ सी, दिस इज द रे ऑफ द लाइट. अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज. जब हम इन रेज का कलेक्शन करेंगे, ग्रुप बन जाएगा, इट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ light. There are three kinds of beam of light. A beam of light are of three kinds. First is parallel beam of light, second convergent, and third is divergent. Now see, this is parallel. सब parallel है. Parallel means they will not intersect anywhere. They will not cross each other. कितना ही लंबा हम इनको ले जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगी. This is convergent and this is divergent. Now we will study one by one about all these beam of light. When a large number of rays are parallel to each other, they are called, see, when they are parallel to each other, ray of light, they are parallel, they are called as parallel beam of light. When rays of light coming from different directions meet at a point, सब डायरेक्शन से आ रही है और एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, those are called as convergent beam of लाइट. पैरेलल मीन्स ये किसी से कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, सीधी सीधी पैरेलल पैरेलल चलती जाएंगी. कन्वर्जन में दे कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीट एट अ वन पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. थर्ड वन इज व्हेन द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट travel in various directions, the collection of such ray is called divergent beam of light. Now see, when the ray of light start करती हैं एक पॉइंट से और दूसरे दूसरे डायरेक्शन में जाती हैं, those are known as divergent beam of light. Is it clear to you? Now see, in science bit it is said light is not visible, but the dust particles in the path of light become visible when light fall on them. हमको लाइट कभी भी इज नॉट विजिबल दिखाई नहीं देती, परंतु जब डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर लाइट आती है तो हमें डस्ट पार्टिकल्स एंटर होते हुए नज़र आते हैं. बिकॉज विजिबल path of light become visible when light falls on them. when जब क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ती है डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, so they are visible to us. Hence we can say that light is not visible, and when it falls on the objects we can see the objects. Clear? Next topic is propagation of light. Propagation means movement of light. How do light travels? Light travels in a straight line. In a cinema hall, you may notice how the light comes from projector falls on the screen. आपने देखा होगा पिक्चर हॉल में प्रोजेक्टर से लाइट निकलकर स्क्रीन पर कैसे पड़ती है. This example shows that the light travels in a straight line. This shows that the light always travels in a straight line. This property of light of traveling in a straight line in a medium is called rectilinear propagation of light. See, this property को light जब when travels in a straight line, it is called as rectilinear propagation of light. It also explains phenomena in relation to the light, including the formation of the shadow. Due to this travel of light in a straight line,
what is formed? Shadow is also formed. We can say due to the propagation of light in a straight line, shadows are formed. Now see, here is the activities, children, to show that light travels in a straight line. What we will take is, we will take two rubber tubes and we will light the bulb over here. See, this rubber tube is straight, so when we will see from this end, we can see the bulb glowing, because light always travels in a straight line. Now in the second this diagram, this rubber tube is bent. From here we cannot see the bulb glowing because this is bent, and I told you light always travels in a straight line. Here the line is not straight, so we cannot see the glowing of the bulb, but here we can say, because the rubber tube is straight, we can see the bulb glowing on the second end, but here we cannot see the bulb glowing on the second end because the tube is bent. So to see the light, we should have this tube of straight line or a straight, then only we can see the bulb glowing. This experiment shows that light always travels in a straight line. Is it clear to you? Now students, see, our next topic is shadows. What exactly are shadows? You have learned that the light travels in a straight line. I taught you that the path of the light is always straight. When an opaque object is placed on its way, what do you notice? अब जैसे जहाँ से light आ रही है, in that place if we put the opaque object means the object from which we cannot see anything. अगर लाइट के रास्ते में हम ओपेक ऑब्जेक्ट सामने रख देंगे तो क्या होगा? Is there any dark region on the other side of the object? We will see that on the other side of the object there will be the dark or black region. दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा. This dark region is called a shadow. और इस dark region को black area region को हम क्या बोलेंगे? Shadow. A dark region is surrounded by partially dark region. और डार्क रीजन किससे सराउंड होता है? पार्शली मीन्स धुंधला धुंधला डार्क रीजन से सराउंड होता है. Therefore, when an opaque object is placed on the path of light, region of darkness or partially light is caused. Therefore, when an opaque object is placed on the path of light, जहाँ लाइट के रास्ते में when the opaque object is kept, region of darkness or partially light is caused. और कौन सा रीजन बनने लग जाता है उस समय हमारे पास? partially lighted area or dark region is formed. It means shadow is formed. This region of darkness or partially light is called shadow. उस एरिया को जहाँ पे लाइट हल्की हल्की आ रही है या डार्क रीजन है, that area is called as shadow. Now you understand how a shadow is formed. When a opaque object is placed in the path of the light, on the next side we can see the shadow of a object. Clear? If a source of light is very small, that is a point source. देखिए अगर लाइट जहाँ से आ रही है बिल्कुल स्मॉल है, उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स. इट इज़ वेरी स्मॉल. देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. हम स्क्रीन रख सकते हैं ऑब्जेक्ट के पीछे, and the shadow will be formed then the image is formed on the screen. Then we can say that the shadow can be formed on the screen. Clear? You will notice that a shadow is formed when the path of light is blocked by an object. Now you must have come to know कि shadow कब बनती है? when the path of light को हम block कर देते हैं, उसके आगे कोई opaque object रख देते हैं by an object. A shadow cannot form if a source of light or opaque object or screen is absent. A shadow कब नहीं बनेगी? अगर source of light नहीं होगा, opaque object नहीं होगा, screen नहीं होगी, then the shadow will not be formed. Remember. Do you observe a shadow in the dark? Dark room में क्या आप shadow देख सकते हैं? You cannot form a shadow in the dark. Clear? अगर source of light नहीं है तो object will not be formed. Object will not be formed in the dark room. We can understand this
with the help of the activity, and the activity is that you enter into the dark room and try to follow try to form a shadow. You will see that no shadow will be formed because the room is dark. Clear? Now, so see students, shadow of an object also depends upon the distance between the source of light and obstacle, or between obstacle and screen, and on the angle between the source of light and the obstacle. Now see what is he trying to say. Shadow of an object, shadow किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट मीन जैसे कैंडल है, सोर्स ऑफ लाइट हमने क्या ले रखी है, सपोज इट इज़ अ कैंडल, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स जो रुकावट, रुकावट मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट जो हमने बीच में लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगी. डिस्टेंस बिटवीन जहाँ से लाइट आ रही है और जो आपका ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. और बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड द स्क्रीन, स्क्रीन हमने पीछे की तरफ रखी हुई है और जो रुकावट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी. And on the angle between source of light and the obstacle. Angle means distance between the source of light, source of light जो आ रही है उसके बीच में, and the obstacle उसके बीच में कितना एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करती है. सो shadow depends upon the source of light and the ऑब्स्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन दम, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बीच में बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड द एंगल, एंगल कितना एंगल है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्स्टिकल के बीच में कितना एंगल है. ऑन दीज ऑल दीज थिंग्स द शेडो डिपेंड्स. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द activity. Now we will do this activity, 11.5. To observe the shape and size of shadow. Long stick and an opaque body like an opaque body like a shape of bird. Procedure: take a long stick and look at its shadow. हम long stick लेंगे, ये देखो पिक्चर में दिखा रखी है, long stick दिखा रखी है, उसकी shadow बन रही है. Clear? You can observe the shadow by moving the stick on the ground. हम stick को move करते जाएंगे, we will see the shadow will also move on the ground. You can observe the shadow by moving the stick on the ground. You will notice that the size of the shadow changes. Size change होता जाएगा क्योंकि distance between the source of light here is the sun, source of light, और उसके बीच में distance change होता जा रहा है, तो shadow will also be change. Sometimes the shadow will be small, sometimes the shadow will be long. Now point the stick towards the sun. अब हम स्टिक को क्या करें, सन की तरफ पॉइंट करें. We will notice the shadow is diminished to a point. फिर हम देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सन और स्टिक का दूरी कम होती जा रही है, हम इसको स्टिक को ऊपर करके सन की तरफ फेस करेंगे. You will notice that the shadow changes, shadow change हो जाएगी. Now point the stick towards the sun. sun की तरफ अगर हम इसको स्टिक को लेके जाएंगे, we will see the shadow is diminished to a point. diminish means बिल्कुल छोटी हो जाएगी. It becomes longer as you increase the angle between the rays of the sun and the stick. जैसे अगर हम इसको, suppose sun is here और हम इसको डिस्टेंस को बड़ा करेंगे तो the shadow will also become increase because the angle between the sun and this object, this is opaque object, इसके बीच में जैसे एंगल बढ़ता जाएगा this will also increase. It becomes longer, shadow becomes longer as you increase the angle between the ray of the sun and the stick. जैसी ray of the sun, sun यहाँ पे है, suppose the sun is here and this is the distance, the angle is increased, this will also the shadow will also increase. And suppose the sun is here, the sun is here and this is your sun, and if you take the stick towards the sun, what will happen, the distance between them will be decreased and the shadow will be diminished. Diminished means it will be very very small. Is it clear to you? Now see, take a bird shape opaque object. हमने opaque बॉडी किसकी ली, बर्ड शेप, किसी कार्डबोर्ड को काट लिया, बर्ड शेप ही ले ली. सिंस द
शाइन द टॉर्च एंड होल्ड द बॉडी इन फ्रंट ऑफ इट। हम टॉर्च जला के, सोर्स ऑफ लाइट इज टॉर्च, हम टॉर्च जला के इस पे लाइट डालेंगे। अ शेडो अपीयर्स, स्क्रीन रख दी, यहाँ पे इसकी शेडो अपीयर होगी। नाउ मूव द टॉर्च नियरर टू द बॉडी। हम इसको नियर टू द बॉडी करेंगे, इस ओपेक बॉडी की तरफ ले जाएंगे टॉर्च को। वी विल सी दैट द शेडो विल change, the change in the shadow as we will move towards here, the shadow will change and हम टॉर्च की सोर्स ऑफ लाइट को दूर करेंगे, then also the shadow will be change. Is it clear to you? Now see students, we can identify the objects with the help of their shadows. हम shadow को देख कर भी ये पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ देयर शेडोज। पर शेडो मीन्स इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज परछाई। बट समटाइम्स शेडो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कई बार हमको ऑब्जेक्ट के शेप को देख के हमको मिसलीड, गलत जानकारी हो जाती है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ सी दिस एक्टिविटी टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स विद द हैंड। टॉर्च एंड वॉल, गो नियर अ वॉल इन अ डार्क, डार्क रूम में हम चले जाएंगे। स्विच ऑन अ टॉर्च एंड प्लेस इन सच अ वे दैट द लाइट फॉल्स ऑन द वॉल। योर वॉल इज योर स्क्रीन। हमने यहाँ पे हाथ रख दिया बीच में, दिस इज योर ऑब्स्टिकल, एंड कीप योर हैंड बिटवीन द टॉर्च। और टॉर्च इधर रखेंगे, आगे की तरफ टॉर्च रखेंगे। सी द टॉर्च इज हियर, दिस इज द वॉल एंड दिस इज योर हैंड। नाउ वी विल सी, यू कैन ऑब्जर्व द शेडो ऑफ योर हैंड ऑन द वॉल। हमने शेडो हाथ की देख ली। नाउ मेक द डिफरेंट शेप्स विद योर हैंड। हम अपने हाथ से अलग अलग शेप बनाएंगे। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द शेडो, शेडो की शेप चेंज होती जाएगी। दिस शोज, दिस एक्टिविटी टेल्स दैट शेडो मिसलीडर्स, हमें गलत जानकारी भी दे सकती है। अदरवाइज वी कैन टेल बाय सीइंग द शेडो we can find out which object is there, but sometimes the shadow mislead us also. We cannot, in this case we cannot tell that it is a hand, but in this case दोनों में हाथ की shadow है, and sometimes we, in this case we can say that shadow is of hand, but in this case we cannot say that shadow is of hand. So this shows that shadows mislead us. It do not tell us the proper or do not guide us properly how the object is. From the above activities we conclude that, अब सारी एक्टिविटीज हमने पढ़ा, शेडो के बारे में पढ़ा, हमने क्या जानकारी ली। द कलर ऑफ शेडो कास्ट बाय द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज ब्लैक और ग्रे। हम किसी भी कलर की, किसी भी चीज़ की हम शेडो लेंगे, ऑलवेज शेडो इज ऑफ ब्लैक और ग्रे कलर। आपने देखी क्या कभी शेडो पिंक कलर की, येलो कलर की, गोल्डन कलर की? नो, शेडोज आर ऑलवेज ब्लैक और ग्रे। नो मैटर वॉट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट का कोई सा भी कलर हो, शेडोज आर ऑलवेज ब्लैक। बी पॉइंट, लाइट, ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। हमको लाइट चाहिए, ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट चाहिए कुछ, और स्क्रीन चाहिए जिस पे बनेगी उसकी शेडो। ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ शेडो। परछाई को बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूर चाहिए। इज इट क्लियर? द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन, देखिए शेडो का शेप और साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। आई टोल्ड यू कि सोर्स ऑफ लाइट कितनी दूर है, पास है, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है शेडो का बड़ा और छोटा होना। द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो जिसकी हम वो बना रहे हैं, शेडो बना रहे हैं, उसके शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर? The position of the shadow is always opposite to that of source of light. Now one more important thing you have to remember is the position of shadow. Shadow की position हमेशा opposite side पे होती है from the source of light. Source of light इधर है तो shadow will be this side. If the source of light is this, then the shadow will be this side. Is it clear to you? I hope this chapter it is clear to you up till here, and that's all for the day. Have a nice day. Okay, thank you. Thank you students for watching my videos. For more videos, please subscribe my YouTube channel.